कल के वीडियो में हमने विनिर्माण के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या विनिर्माण की समीक्षा। इन जनरल parlance, manufacturing means converting an input raw material into output finished product with the use of man, machines, material, power, etc. Such finished goods may be used for manufacturing other more complex products such as aircraft, household appliances, or automobiles, or sold to wholesaler who in turn sell them to retailers who then sell them to end users, the consumers. कल भी हमने वीडियो में देखा था कि कच्चे माल से कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के बाद में फिनिश प्रोडक्ट निकला। फिनिश प्रोडक्ट कैसे बना, जिसमें हम मानव का प्रयोग कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, माल का प्रयोग कर रहे हैं और पावर का प्रयोग कर रहे हैं। फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड प्रक्रियाओं से होकर बना और उसको होलसेलर तक पहुंचा। होलसेलर के बाद में वो रिटेलर और रिटेलर ने उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का रिव्यू है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या उसका कोई मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या वो एक किसी मैनेजमेंट सिस्टम के आधार पर काम कर रही है। वेदर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग वेल डिफाइंड, वेल डॉक्यूमेंटेड, क्या वो वेल डिफाइंड या वेल डॉक्यूमेंटेड है या नहीं। Whether the organization have a quality management system in place, if so whether the organization have a written quality policy and whether it is or not। क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वालिटी बेस्ड है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी बेस्ड है या नहीं, रिटर्न में वो अपनी कोई पॉलिसी रख रहा है या नहीं। Whether the organization is following Six Sigma, whether the organization have a written maintenance policy। सिक्स सिग्मा के बारे में हम और किसी वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लिखित रूप में कोई मेंटेनेंस पॉलिसी रख रहा है। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैव ए रिटन स्क्रैप पॉलिसी, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्क्रैप पॉलिसी, रिटर्न में स्क्रैप पॉलिसी है। वेदर सिक्योरिटी पॉलिसीज आर डॉक्यूमेंटेड और नॉट, क्या वो उनके जो सिस्टम्स हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड है या नहीं। अब 10 स्टेप्स टू एन इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। Overcoming the challenges of making company-wide manufacturing operations more customer-driven needs to start with a clear definition of what success looks like. Having accurate real-time production visibility improves product quality, order accuracy, and customer satisfaction while driving down manufacturing cost at the plant level। क्या कस्टमर के लिए वह एक्यूरेट है, कस्टमर सेटिस्फाइड है उससे, और उसका कॉस्ट जो है वो लेवल उसका कम है या नहीं। कीपिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस अक्रॉस ऑल लोकेशंस फोकस्ड ऑन ए कॉमन सेट ऑफ गोल्स इम्प्रूव्स ग्रॉस मार्जिन्स, रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट पर यूनिट while improving on time order delivery and perfect order performance। क्या है, 10 आपके स्टेप्स हैं जो एक इफ़ेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के हैं, जिसमें क्या क्या शामिल हो रहा है भाई। पहला हमने ये देखा कि क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रियल टाइम है, क्या उसकी विजिबिलिटी है, क्या कस्टमर्स उससे सेटिस्फाइड हैं, क्या उसका कॉस्ट लेवल कम है। उसके अलावा हम ये देखें कि जो कॉमन सेट उसका प्रोग्राम है, जो गोल है, क्या वो एक फिक्स है, क्या ग्रॉस मार्जिन उसके अंदर है, क्या कॉस्ट को कम किया जा रहा है। यदि ये सभी क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं तो वो एक इफ़ेक्टिव ऑपरेशन, एक इफ़ेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा। द एरा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंस हैज़ अराइव्ड
fueled by data from manufacturing execution system with manufacturing operations management strategies accelerating adoption company-wide, improving product quality, reducing cycle times, automating manual workflows, and streamlining plant floor operations are a few of the many benefits of adopting a company-wide manufacturing operations management strategy. Improving product quality, reducing cycle times, automatic manual workflow, and streamlining plant floor operations are a few of the many benefits of adopting a company-wide manufacturing operations management strategy. प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है या नहीं. Defining the strategic goals of having all production centers contributing to a series of company-wide lean manufacturing, supply chain quality and production service and customer satisfaction goals galvanize diverse production locations together. Instead of having to rely on many different disconnected systems to manage diverse production locations to a common set of goals, manufacturers are adopting company-wide manufacturing execution management systems. Planning and scheduling, quality management, inventory optimization, tooling management, preventative and predictive maintenance, and manufacturing intelligence are the core functional areas included in MES today. Meeting customer expectations of real-time responsiveness and quality across all selling and service channels, customers expect real-time responses to their questions in addition to product quality that is world-class. How well a manufacturer meets or exceeds these expectations will have as big impact on their future growth opportunities. That's why having a scalable secure manufacturing operations management strategy in place is key to future growth. The core components of this strategy are available in MES. They need to orchestrate to excel in the context of a given manufacturer's unique challenges. While each manufacturer's operation strategies and challenges are different, many share the following: increasing company-wide production efficiency across all plant locations from the production team to the location level while reducing cost, making quality a core part of production operations with each plant making contributions to overarching quality goals instead of allowing it to be a sole function, achieving real-time supply chain order management and production performance visibility across all manufacturing operations, excelling at data collection to the machine, team and plant level, including piloting internet of things as a means to capture data in real time, defining manufacturing operations analytics that encompasses all production centers and provides updated on overall equipment effectiveness and manufacturing intelligence.